welcome back to my channel called zuzanareacts, where I learn all things Bharat with your help, and I just share my Slovak Central European point of view. And in today's video, we're going to do something fun. So there is a stand-up comedy about a first trip to Europe, by Mr. Gupta. So I'm actually very, very curious what this brings. But before we jump into today's video, please like this video and click on the subscribe button and turn on the notification. Thank you so much for your support. So I say, let's get into it. बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, वो बहुत सुंदर है यूरोप। और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था। मजा बहुत आता है, पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास। जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहां से पुणे जाओ, 4 कंट्रियां उनकी। ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है। पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश, मैं ये सही है का भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने, है ना? और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम, तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें। तो बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ। मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, मैं इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूं, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूं स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ यार। तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा। कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी ऐसे ना, कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। कहाँ मेरी भारतीय बहन है? पता है, फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे। वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब, ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है, ऊपर लिखा है, मैं टीटी देख रहा हूँ। ओए तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, मूड ही खराब रहता है वहां। बाहर फुल मैनर्स चल रही है, हाउ यू, आई एम गुड, हाउ यू, गुड डे, नो वरीज नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, 2 बूढ़े मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं, मैं किसको कर रहे हैं? फिर 2 और आए, मैं क्या हंस कर मुझे देखे यार, हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है, वहां नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे, कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर, तब से देख रहा मुझे, बस मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहां पर। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बोंजूर, je m'appelle आकाश,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में, ऐसे बोलते हैं पार्ले-वू अंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी उई 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 उई, तो मैंने भी पीछे से कर दिया मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विश गिश विश, मैं कहा वनी ई। टिक टिक 1, टिक टिक 2। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, पता एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस, बदतमीज BSD के। तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहां पे एक लड़की खड़ी थी, मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर। किसका सही है ये? राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने? आप घराने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा मैं पार्ले-वू अंग्लिश, मैं कहा उई पता था ऐ क्या है? इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता? और सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है वहां लैंग्वेज की? जब आप उनको इस समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है, सब कुछ कच्चा खा जाते हैं, एकदम ठंडी सलामियां, कच्चा मीट, एकदम मतलब समंदर से सामान निकालते, ले ये लिखा ऑयस्टर, ऐसे खाते कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान हो जाता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझा दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, या वार्म। अरे समझ तेरे कुछ, माइक्रोवेव गूं, वहां से विश 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 विश, मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे 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 दे, ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगट में मेरे, गरम नहीं किया उसने। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है। तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया है, ठीक है। तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं, तो उसमें लिखा हमस, बटर चिकन, नान। मैं कहा अपने ही लग रहे हैं, अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे। बाहर सब प्यार से रहते हैं, वहां नहीं लड़ते, वहां लड़ते हैं वीजा कैंसिल हो जाता है ना, तो वापस आना पड़ता है वहां। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बॉन्जूर, किरी बॉन्सवा। मैं कितना सिलेबस है, तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार, मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं। मैं कहा पार्ले-वू अंग्लिश, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठे चुपचाप। बड़ा पार्ले-वू कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर बैठ, तू बता, थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा, आम का खाएगा? मैं कहा माँ पेरिस में नींबू आम का अचार, मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के, बहुत टेस्टी था यार। पर उसके 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब तो मैंने ठान ली, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गए, बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में, 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने की? मैं कहा नहीं, धोने की। मैंने कहा मैं चाहता हूं एक जेट आए और चीर दे मेरी। मैं कहा फाड़ दो मेरी, पानी मार दो, ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे।
35 दिन से धोने को नहीं मिली है। ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार, मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूँ। लोग कह रहे ये क्या, मैं कहा इट्स माय वॉक। चूस। तो अब खत्म हो गया टॉयलेट रोल। फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, कैसे समझाऊंगा इनको? मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या टॉयलेट रोला, पता नहीं क्या बोलता हूँ। तो मैंने रूम का दरवाजा खोला, एक हाउसकीपिंग वाली एकदम पास में खड़ी थी। मैं कहा बोंजूर मैडम, बोंजूर मसियो, आई नीड टॉयलेट रोल। विश विश या विश। मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा। आई नीड टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ जाएगा। एक ये गवार के बच्चे फ्रेंची, ये सालों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार। लगी हुई है वुश कुछ वाश है जसुइवा और जब वॉक जीजू। मगर टॉयलेट रोल भाई उसको ये भी समझ नहीं है। फुल जल्दी थी मैं बता रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ। वुश वुश वुश। ये गत्ता घूम रहा है गोल गोल, इसके ऊपर का कागज दे दे, धोनी है। Oh yo, waje baba jasuya, merci beaucoup. मैं का फुतरे फू। किसी को फ्रेंच आती ना हो, सबको पता था मैंने गाली दी है, लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों, सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम हमें। और मैं बाहर पहली बार गया था यार, मैं तो एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ था बाहर जाके, जो ये गोरे बुढ़े होते हैं ना भाई, ये बहुत सही है। ये सब कर रहे हैं लाइफ में, इन पे उम्र ही नहीं लग रही है। ये खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं, एकदम ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहीं चढ़ तो जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ बाहर? क्या मजबूरी है इसकी यार? वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैंने तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले है? तेरा कुछ ईसब गोल्ड डाइजीन पेंटोसेट को चल नहीं रह गया भाई? ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार? मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपने घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आकाश मुझे। मैं चली देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो, सो जाओ यार। छोले खा के मरने की एक्टिंग कर रही है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी पूरी वाइन की बोतल पी के। मैं कहा बुड्ढी तेरे हैंगओवर नहीं हो रही यार? ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी गई अकेले यार? भाई बहुत फिट होते हैं यार वहां के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं। तो मैंने भी किराए पे साइकिल ले ली, हर कोई साइकिल चलाता था यूरोप में। तो मैं ऐसे आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में की। वाह यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुढ़ा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, कमान रतन। तो ना मेरा भी ईगो हट हुआ। मैं कहा रुका बुढ़ा, साला तेरी चलाऊं कैसे? मेरे को गियर वाली साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली यार? पता फॉरेन कंट्री तो चूतिया लग रहा था, मैं पेडल मारी यार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। मैं कहा इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार? ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही है, ऐसे चलती हूँ वो। तो मैं सोच रहा हूँ एक साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगे, ब्रेड ले आएंगे, दूध ले आएंगे मार्केट से, क्या हो गया? काम चोर है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है? ऐसा मत सोचो आप। Well, so this was interesting. So I'll get it first off my chest. Obviously, I couldn't understand everything, and the jokes that were meant to be to Indian audience, I hope that was clear.
I've written out a number of notes. So basically, in his video, he really talked about French and European. And I think before I even start talking about this, it's, you know, obviously India is big and diverse, but Europe is also maybe not as big, but incredibly diverse. Like a Slovak person, I feel I have absolutely nothing in common with the French or German people. So Western kind of European people type of thing. So I just kind of wanted to make that super clear. So he is referencing French a lot. So I have written notes, and I wonder how this is going to go because I don't know if I remember everything. Yeah. So one thing he's mentioned about people going around and smiling. So I'm actually surprised. I wouldn't be expecting that of French people. I think this is more. So when you walk on the streets here and you walk against, you're passing people, you could like smile. It's just a way of you being polite. I know that in the US, it's not perhaps in the big cities, but in the small towns, it's apparently a thing where everyone just greets each other and smiles. And I think it's such a really nice thing. I'm just real surprised he mentioned that because I wouldn't be expecting that of French. But yeah, it could not, maybe it's not uncommon. I don't think like from my time in London that I would be going around smiling at people, but when you're passing, so you're looking at someone in passing or you're in a shop, you just, like you're passing someone trying to squeeze in, you smile, you're just trying to be polite. That's one thing. And when he said about Delhi, that the people look down and that it's going to be an attack when you're smiling at someone, please do let me know if that's true, because I'm going to India actually. And I just kind of don't want to bring anything about myself. So do let me know, because, when you look at someone, you just smile, and that's just your way of being nice and polite. That's kind of all that is. So French do like their language. And he also mentioned that they can't speak English much because they can't. That's the reality. There are some that can, some that can't. For those that can, don't really live much in France and live in different countries. The accent, the French accent, I personally find can be very strong and sometimes very hard to understand. They're very proud. They're very, very, very proud nation. So when you go and watch their telly, everything, like literally everything, is in French, as in, so I'll give you an example. So I used to work in TV production many years, and you have something called clearance, so your commercial will not go on air unless it meets some sort of legal requirements. And for French, everything has to be translated, subtitled. Whereas in Slovakia, we are not a proud nation, and you would see a lot of English Slovak use also in commercials, which could never happen. Like under no circumstances could happen in France. They are very proud. They have a very strong national identity, whereas like in a standard commercial you would hear English words. You would hear people in like even political debates using English words, which I find, as one criticism for my country, very, very odd, because we do have equivalent language. But I think Slovak people, since it's a slave nation, very insecure and want to be, I guess, very aspirational in that sense. It's not like it happens for Slovak people living in Slovakia. So when I would speak Slovak or English, it's because I've lived almost, like 15 years in the UK. So certain things are way easier for me to say in English than they are in Slovak. Slovak language is not as rich as English language. So it's sometimes much easier for you to express yourself in English, right? That's not just like me trying to be artsy or trying to, like sound like I'm some sort of smartass. It's natural. You live in the country, but here people are
really strangely using that. I call for a revival personally of Slovak language here, but let's see, it's kind of a mentality now. Yeah, so you will perhaps without French, I think maybe in the capital you will not struggle, but maybe outside you will. I've been to Paris twice, I reckon, and out of that was one for work. And when he talks about baguettes, honestly, guys, I've had the best baguette of my life in France, hands down. It was like the best thing ever. I think their cakes are just through the roof, out of this world. I know because I also have a manager once, and she used to bake, and she lived in France for maybe a decade, and it feels like they have a different floor and that they make bakes with. Literally, it just it's just mouth watering. It's just so soft. I like kind of spongy cakes, but they are like a sand, like it melts. I can't explain to you. I think next time I go to France, I'm going to buy their flour, and that's how I'm going to bake. But yeah, I think their food. I don't personally would say that I would be eating French food, apart from baguettes. I haven't spent that much time there, but yeah. And what did he say? Oh, about the the toilet rolls. That was funny. I didn't know until like literally a week ago that you guys use bidet. I It's basically not a normal thing here. But for example, funnily enough, I do have one in my apartment, but it's just really not normal. Yeah, I think the idea comes to mind, like if you use it, you're going to be all wet. Like, how do you wipe yourself? So it doesn't really make sense in our heads, funny enough. So yeah, and what else was there? Yeah, cycling. Now the cycling thing. So I think the last couple of years, I don't know if it's maybe like 5 or so, and I find this phenomenal throughout Europe, and I don't think it's just that much about cycling, but people start to really care about their fitness, like, and I don't know why cycling has picked up, but literally everyone cycles now. Even everyone in Slovakia cycles. Like, my mom is like, why don't you buy a bicycle? And you know what, guys, I do not like it. I do not enjoy it. I always thought, and this is no offense to everyone, like people that cycle might be a tiny bit strange at times, but that was my experience. So when I would be dating, on my dating profile would be like, no cyclists, please. That is how much I found them strange. So but no, it's huge. But obviously you have small cities, especially like you have Amsterdam where people cycle a lot. It's been like a long-term thing. You have cities in Belgium that people do cycle a lot, but I feel like the cycling phenomena, I have no idea why it had spread across. Everyone cycles, like literally everyone cycles. I don't know what's with the cycling. I'm clearly not a fan, but yeah, it really is a thing. And when he talks about old people, so that's another interesting one. So old people from, I would say, Western European countries are perhaps very different to old people in my part of the world, so in the Central Europe. So in Western European countries, but what I also found with Americans, obviously it's like a rich country, they have good retirement, so they are actually living their best lives. They're enjoying their lives, they're going on trips. When I once met Americans who were like, oh, we do a birthday week. Like for their birthday, they take a whole week and they just go and hike and, you know, and just really enjoy themselves. I would not find it surprising if someone can drink a bottle of wine. I think that a lot of people. So, for example, I don't really drink. I'm just like a social drinker. I don't like really the taste of alcohol, but I would say that many like people
in our part of the world, they apparently love to drink. I don't kind of know why. Why that? Because to me, it really does not taste good. It really, really doesn't taste good. But yeah, and especially French, they have wine. I went to France for like a champagne tasting. Now that was a fun trip. But yeah, I would not find it surprising if people can down thing. Like in Slovakia, also people drink, but they actually drink rather hard alcohol, like the spirits. And you would get like a bunch of guys that would sit around the table, and the whole liter bottle, like as in the spirit, which is like 50 or 70%, they would drink like in a night, plus many, many beers with it. So yeah, people do like to drink, I feel like in general. And you know, like English love to drink, they just don't like, they don't drink spirits as much, they're more beer based. And I would imagine because of wine in France that they drink a lot of wine over there. I personally don't like wine at all. um, so yeah, and what else did I say? What else did I have? We're talking about yeah, the old people. So when you compare like the Western old people that like Germans or perhaps French, they have really good retirements. They honestly, as I mentioned, living their life. In my part of the world, I think it's very similar perhaps to India, where people are still the generation that works in the field, that they have their health, you know, like worn out because of the really hard labor. And you would find like a traditional grandmas and grandpas with like a thingies over their heads. And yeah, they would definitely not exercise. They would go to doctor more often than anywhere place else. So I think that's a big difference between our part of the world, like Central Europe plus Western Europe. And it was interesting that he's mentioned soap opera. So soap opera, when I was growing up, it was very, very popular. So we used to have like an Argentinian, like Latin American soap operas, and it was for also like it wasn't just grannies that were watching that, but everyone was watching it. It used to be super duper popular. So it's interesting to see that's kind of similar in India when it comes to soap operas. So um fascinating. There are definitely similarities, I think, because I guess between my part of the world and your, um, yeah, it's I'm so surprised at the soap opera, guys. I never thought that you would be watching that. But yeah, here the old people have been through a lot. Maybe some of them, they are still alive, lived through Second World War. I'm not saying that French, you know, like they might be old and they could still have lived through the Second World War. But oh, like for example, Slovakia is basically a village if you think about it. Like you guys have way bigger cities than even our capital, and they're not the capital. So a lot of people just live still alive where they have chickens, they have pigs, they have maybe not so much cows anymore, but they have some sort of a livestock when it comes to villages. And you have lots of small villages, but a small village means like a maybe a 500 or 1,000 people, and you have gazillions of them all across Slovakia. So people then farm and do potatoes and, you know, like really different vegetables, etc. And because of that, obviously your body gets damaged, right? Like you're laboring really, really hard on the field. And you know, some of them, because that was their whole life, they perhaps even enjoy it. But that's kind of how he was saying, like the grandma would be bent and all that kind of stuff, because they didn't have the easiest of lives. Whereas you know, in Germany or France, these countries, you with their economy, it's a tiny bit different. There is also a very different mindset. So yeah, very interesting. A very nice video. Very nice video. It's a shame that I couldn't really get all the references. And I believe that is it for today's video. Thank you guys so much for watching. That's with me. If you did enjoy, please give thumbs up, share, like, and subscribe to this channel. And I will see you next one. Until then, please do take care. I am sending much, much love. Bye bye.